Hello, kids. This is your teacher, Ahmed Ali Shah. So I was doing a video and someone just interrupted in my last video and मुझे फिर से करनी पड़ रही है. Anyhow, we're gonna make it interesting this time. Today we're gonna be talking about industries, types of industries, what scale they're based on, and everything in that context. When we start, we're going to talk about our primary industry. So basically, there are three types of industries. There's primary, there's secondary, there's tertiary. Primary industry, as the name says, primary, everything that comes naturally to us. So agriculture is something that is natural. Mining is something that we get from the earth. Next is your forestry as well. You must be thinking, forestry से हमें क्या मिलता है? Do we just kill animals and do that? Nahi, forestry se we get wood, a lot of wood that we convert into either furniture or we convert it into your paper, the one that you use every day. Next, we're going to talk about our secondary industry, which is manufactured goods. It is assembled goods and it is processed goods. So anything that we produce here, agar hum leather jeans bana rahe hain, that is your manufactured good. If we're assembling a car in a factory, that is your assembled goods. If we're making tractors, if we're making anything that has to do with production, so basically sugarcane, हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से वी गेट शुगर केन, सेकेंडरी इंडस्ट्री में वी डेवलप इट इनटू शुगर, एंड देन व्हेन वी गो टू द टर्शियरी इंडस्ट्री, दैट इज द शॉप्स जहाँ पे शुगर बिकती है. सो इट इज़ अ होल प्रोसेस दैट वर्क्स टुगेदर. योर टर्शियरी इंडस्ट्री नॉट ओनली जस्ट टॉक्स अबाउट शॉप्स बट इट इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, anything that provides services, transport as well. Transport भी एक service है जो आप दे रहे हो, उसमें गाड़ी बनाते नहीं हो या रोड बनाते नहीं हो. तो anything that is a service, anything where you try to sell something is where your tertiary industry comes in. When we talk about scales of industries, there are three different scales as well. There's a small scaled industry, there's a large scale industry, and a medium sized industry. So small scale, बहुत सारी हो सकती हैं. You've got small little कोने कोने नुक्कड़ पे, you've got bed and bath industries, कपड़े बनाने की industry, cotton industry, you've got textile industry. All these could be small industries and medium as well, depending on कितनी बड़ी operation है. Just to give you guys an idea, a small little industry is Deepak Parwani. छोटी सी अपनी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करता है. while at the same time, if you look at Gul Ahmed, if you look at Ideas, these are huge brands. इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, मगर yet still they're medium sized industries. Now you're going to be wondering कि large size फिर क्या है? If Gul Ahmed and IKEA, sorry not IKEA but Ideas are medium sized, what is large scale? Large scale are cement factories, are steel mills, sugar mills, all these big factories जिनकी होती है ना, which cannot be shut down even for a single day. These are your large scale industries. Iron ore industry हो जाती है, refinery industry हो जाती है, all these things are your large scale. Next, we're going to talk about the GDP. GDP क्या होता है? Gross Domestic Product. We don't know, so I'm going to tell you about that. So your GDP is the total output value of your outputs, which is your goods and services. However many, whatever number of goods are produced in a country, plus all the services that are given in a country, makes up your GDP. Anything and everything जो भी आप अपने मुल्क में कर रहे हो, which is like selling part वाला and production part वाला, is your in GDP. It also includes agriculture as well in there. Your largest GDP जो आपके पास आता है comes from the tertiary industry. As we can see, education is huge in our country. Healthcare is huge as well. So ये जो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, banking, कितने सारे banks हैं. So that industry is your major contributor to your GDP. Next, आपका number 2 पे आता है your primary industry, जिसमें agriculture gives the most of the contribution to your GDP in your primary industry. Last 50 years में your agriculture has seen a decline. Why has it seen a decline? Because पानी के मसले होते हैं. A lot of people, because of water problems, are now moving from their villages to cities, big cities, क्योंकि everyone thinks कराची में तो नौकरियां हैं. Let's go to Karachi, we're going to find a job there, हमें agriculture नहीं करना पड़ेगा, and excuse me, and हम बड़ा खुश रहेंगे कराची में जाके. So a lot of, in the last 50 years, a lot of people have moved away from agriculture, and agriculture का आपका GDP contribution गिरता ही गिरता जा रहा है. Next,
we're going to talk about the factors that influence your development of an industry. This is very, very important क्योंकि the factors when we talk about water and power is the first factor. अगर आपके पास पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, आपकी फैक्ट्री चलेगी ही नहीं. मतलब लिटरली व्हाट कैन यू डू? यू गॉट नो वाटर, आपकी मशीन्स में वाटर जाता है, आपके पास बिजली आती है जिससे मशीन्स चलती हैं, डन एंड डस्टेड, आपकी फैक्ट्री बंद हो गई अगर पानी एंड सप्लाई नहीं है, पानी एंड पावर सप्लाई नहीं है. नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? इस्लामाबाद? नहीं, नहीं, इस्लामाबाद इज येस द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मगर व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल हियर इट्स टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक कैपिटल which is the investment that a person makes. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अपना बिजनेस है, उस बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे मैं डालता हूँ दैट इज़ द कैपिटल. सो बेसिकली इफ़ आई हैव अ ह्यूज इंडस्ट्री एंड आई नीड टू बाय अ न्यू मशीन, दैट इज़ गोना बी द मनी दैट आई स्पेंड ऑन दैट मशीन इज़ गोना बी द कैपिटल जो मेरे पास होगा. इफ़ इमेजिन टुमारो यू डोंट हैव नो कैपिटल, यू कैन नॉट पे योर बिल्स. आप बिजली का पानी का बिल नहीं पे करेंगे, आपके पास बिजली पानी नहीं आ रही बिकॉज यू डिडंट हैव कैपिटल, आपकी इंडस्ट्री ठप हो गई. Next, we talk about transport and communication. Again, transport, if that is not there, production costs are going to be high. अगर आपने एक बड़ी सी mine खरीद लिया and you're working on that mine, मगर there's no transport route to actually take those products out and आप कहीं पे पहुंचा सके solid जगह पे, तो you're going to be incurring a lot of costs के वो एक जगह से दूसरी जगह मैं कैसे ले जाऊँ. आपका कॉस्ट बढ़ेगी तो आप मार्केट में जब बेचने जाओगे तो आप 4 रुपये का बेचोगे जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू इज़ 2 रुपये, आपसे कोई नहीं खरीदेगा. सो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 3 इज़ रॉ मटेरियल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. इमेजिन आप शुगर मिल चलाते हैं, आपको किसी ने गन्ना ही नहीं दिया, हाउ आर यू गोना मेक शुगर? आपकी इंडस्ट्री तो तबाह हो गई. सो दैट इज़ वन मेन फैक्टर एज वेल. अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज दैट आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, उनके लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है. Next, we talk about one of the main ones, which is labor. If you don't have labor, you can't work. कौन आपकी फैक्ट्री कौन चलाएगा? आपकी मशीन कौन चलाएगा? There is something known as skilled labor. Skilled labor वो होता है जिसको ट्रेनिंग मिली हुई होती है किसी चीज़ की. If I've done a bachelor's degree, that means I'm skilled. If I haven't done a bachelor's degree, या if I haven't done any sort of a course, that means I'm not skilled to do it. So skilled labor is very important and labor in itself is very important. नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट में मसले होंगे तो आपकी हर चीज़ में मसला आएगा क्योंकि योर मैनेजमेंट मेक्स एवरीथिंग रन एफिशिएंटली. अगर आपका मैनेजर जो है वो ही सो रहा है, वो काम नहीं कर रहा, तो वर्कर इनकरेज होंगे काम करने के लिए? आई डोंट थिंक सो. एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट योर मार्केट्स. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर मार्केट्स. अगर आपके पास किसी चीज़ की मार्केट ही नहीं है, इमेजिन आई इन्वेंट समथिंग न्यू, आई इन्वेंट अ डिवाइस जो उड़ती है, आई इन्वेंट अ कार जो उड़ती है, सही, एंड वो बहुत महंगी है. पाकिस्तान में उड़ने वाली कार कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता, तो मेरी कार इज़ गोना बी यूजलेस, वेस्ट, सही. सेकंड, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट्स, मार्केट्स बहुत क्रूशियल होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इमेजिन इफ़ आई एम एक्सपोर्टिंग मैंगोज, अपना मैं I give mangoes to America. Every time I give mangoes to America, America calls me up and they're like, आपके मैंगो में डिजीज़ तो नहीं है, आपके मैंगो के साथ आप मक्खियाँ तो नहीं भेज रहे हमें? And I'm like, no, I'm not. And the only way I can guarantee that is when American market looks at those mangoes and they say कि okay, इसने सही दिया है. If I fault ऑन दैट एक्सपोर्ट, अगर उसमें एक भी मैंने कुछ कचरे वाली चीज़ भेज दी, देयर गोना बैन मी कि अगली बार से आप ना भेजें. जो मेरे 10,000 मैंगोज अमेरिका जाते थे अब वो कहीं नहीं जाते, अब वो मैं खुद बैठ के खाऊंगा. एग्जैक्ट. सो माई मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. अगर इफ़ यू हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अराउंड, दैट इज़ एक्चुअली कैन मीन दैट एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री. अनस्टेबल गवर्नमेंट्स, नो वन वांट्स टू. पिछले दिनों वी हैड ड्यूरेस इन कराची. And I'm definitely going to say no foreign investor wanted to come in just because उनको पता है कि हम बिजनेस लेके we go to पाकिस्तान में कोई हमारे वर्कर चोरी कर लेगा, कोई हमारा सामान चोरी कर लेगा, कोई हमें किडनैप कर लेगा. So अल्लाह हमें नहीं जाना पाकिस्तान. सही. Political stability is that, and then the second thing is government policy. A lot of times a lot of things are expensive to produce, मगर your government puts tariffs or subsidies on products. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली फार्मर्स को इनक्रेज किया जाता है कि प्लीज़ प्रोड्यूस
certain types of crops, and हम आपको पैसे देंगे when you produce those crops. When you produce those crops, we're gonna even buy them back from you. So all these guarantees are government policies in regards to everything. Next, we're going to talk about the extraction industry. Extraction industry is a part of your primary industry. The word extract, मतलब कोई चीज़ निकालना. Basically, the extraction industry is liquid or gas that is extracted from the earth. कौन सा गैस एक्सट्रैक्ट होता है? नेचुरल गैस जो हमारे चूल्हों में जलता है. कौन सा लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम अर्थ? पेट्रोल, डीजल, फ्यूल्स, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें हमारी ज़मीन से निकलती हैं. लेट्स टॉक अबाउट जो ज़मीन से चीज़ें निकलती हैं वो ज़मीन में पहुंची कैसे. हाउ डिड दे बिकम व्हाट दे आर. So basically thousands of years ago during the dinosaur era, it is said कि dead marine plants and animals वो जब मर जाते थे they used to settle at the bottom of the river or the bottom of the sea. जब वो नीचे settle हो गए and every time the water flows in a fast speed, अपना it brings sediments. What are sediments? Sediments are small rocks and big rocks जो ज़मीन समंदर की ज़मीन में आगे पीछे उड़ते हैं. अगर आप सी व्यू जाएँ तो आपको पैरों में वो पानी लगेंगे. As we've done in the last chapter, sediments are rocks, big and small. वो जब big and small rocks are carried along the river bed नीचे नीचे से and they get to a certain point जहाँ पे वो उस marine animal या plant के ऊपर आ जाते हैं. What happens जब वो ऊपर आते हैं तो वो प्रेशर बढ़ता जाता है and it is not just one rock. एक रॉक आ गया, उसके ऊपर दूसरा आ गया, उसके ऊपर तीसरा आ गया and eventually उनका weight इतना ज़्यादा होता है and also the bacteria there causes decomposition. Decomposition के बाद all these dead animals and plants they turn into either crude oil or natural gas. It is a process that takes millions of years. So that just tells us कि gas हम एक दिन में नहीं बना सकते. It has to be formed inside the earth and it takes millions of years. Next, we're going to talk about anticline and syncline. Anticline and syncline. Anticline is जब आपकी ज़मीन जो है वो presses against one another and it folds like this. आपके sedimentary rocks जो होते हैं वो यूं हुए हुए होते हैं. While at the same time syncline में यूं हुए हुए होते हैं. Next, I'm going to talk to you about permeable rocks. Permeable rocks are formed from sedimentary rocks. Sedimentary rocks क्या थे? वो जो 4, 5, 6, 8, 10 पत्थर आए एक दूसरे के साथ आके रुक गए. वो जब रुक गए they kind of after a while attach together क्योंकि वो जोर इतना ज़्यादा होता है. They kind of attach together and once they attach together they become permeable rocks. Permeable rocks are rocks जो sponge की तरह होते हैं. उनमें से ऊपर से पानी डालेंगे, नीचे से पानी निकल आएगा. It's not a solid block. It's thousands of rocks coming together and forming one rock. Let's move on to natural gas. हमारी natural gas पाकिस्तान में सुई से आती है. In 1952 is when it was discovered and सुई is the biggest resource where we get our natural gas. Next is Mari. Mari क्या है? Mari is our second most important reserve for gas. फिर पीरको, कंदकोट ये सारी भी आ जाती हैं मगर I would like you to look at the map in your book क्योंकि maps मैं अपने notes में डाल नहीं सका तो please do have a look at that. If we talk about distribution of these natural gas, so basically what happens is एक बार हमें natural gas मिल जाता है, we put a pipeline. जाहिर सी बात है, we can't take it anywhere just like that, so we put a pipeline. Gas की pipeline has to be airtight, so it's very expensive, and because of the place it is coming from and the cities it needs to go to, इतनी लंबी channel होती है कि it becomes very very expensive. Large capital is required, बहुत पैसा is required to actually form those pipelines. Let's talk about gas. क्यों चाहिए, किधर चाहिए? So all homes require gas. खाना हमारा चूल्हे पे जो पकता है, it requires gas. Industries में gas is required because they do a lot of burning of things. So gas is required there. Factories में it is required. And then there are gas-powered electricity power stations. उनमें उधर भी बहुत सारा gas चाहिए होता है. The last thing today we're going to talk about, I've actually left out Saudi Arabia and Qatar because I was told is not coming in the topic. So last thing today we're going to talk about is Pakistan and its natural gas. Natural gas, as you guys know, I told you कि हम एक दिन में नहीं बना सकते. It is hence a non-renewable resource. Renew
क्या चीज़ हो सकती है? आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है, आपकी कोई चीज़ है जो पुरानी हो गई है उसको आप रीन्यू कर सकते हो। गैस इज़ बिकॉज हम नहीं बना सकते एक दिन में, इट इज़ नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट, हमारे पास व्हेन वी टॉक अबाउट गैस, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ गैस रिजर्व्स इन बलोचिस्तान। मगर बलोचिस्तान में मसला ये है कि द ट्राइबल चीफ्स आर लाइक कि नहीं 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 नहीं, वी डोंट वांट यू हियर, वी डोंट वांट यू हियर, आप अपने जगह पे रहें, ये मेरी जगह है, इधर कोई नहीं आएगा। व्हेन international people came to Pakistan and they were like हम बलोचिस्तान में से गैस एक्सट्रैक्शन करेंगे, they faced a lot of difficulties। कभी उनके लोग किडनैप हो जाते थे, कभी उनको डेथ थ्रेट्स आती थी, और कभी कुछ होता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल दोज पीपल लेफ्ट, एंड अभी बलोचिस्तान में कोई गैस एक्सट्रैक्ट नहीं करता। And if that continues, if that keeps going on, then हमारे पास the only options that we're going to be left with are going to be either Qatar, Iran or Turkmenistan. All three of these countries have huge reserves of gas. मगर again, the problem is exactly the same. अगर हम कतर से हमारे पास गैस लेके आ गए, तो you're looking at millions of kilometers जो हम वो गैस की पाइपलाइन डालेंगे, मिलियंस ऑफ मीटर्स की गैस की पाइपलाइन, जो बहुत खर्चा होगा, बहुत वेरी वेरी एक्सपेंसिव। So that is going to be our end for today. Take care, lads and ladettes, and we're going to see you in the next class. Bye bye.